खाने के बाद के सेशंस वैसे भी थोड़े से हो जाते हैं. So I would like your involvement. सेशन है भी ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर है, challenges के ऊपर है, और हम सारे experience आप बल्कि you are in a very how would I say, maybe start कर दें. So you guys are in a very unique position, like you acted as teachers. I think most of you taught during 2019 and 20, और अभी as students we are participating. तो आपका input जो है ना मेरे लिए भी बहुत important है, because I've been teaching using technology and all that, but I don't know how it is. I mean, really or personally, how it is to be on the other side, you know. So this is where your experience is. I mean, topic go very clear, you know, online teachers. Yes, sir. एक सेकंड. You never taught online. You never taught online. No teaching. You never taught. Everybody else says that online teaching give you something. It is very complicated, sir. Huh? Sir, it is very complicated, or such places which are means they are undeveloped areas. There are far-flung areas, infrastructure. Yes. We are going to come and touch that. But Sir, who just know internet for the Facebook only. or जो एक्चुअल ऑनलाइन टीचिंग है वो हमने भी नहीं की सर. हम अक्सर रिकॉर्डेड लेक्चर ही दिए हैं वो, क्योंकि जो कभी स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं होते, कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, कभी हमारी तरफ से इश्यूज होते हैं. हमने ऑनलाइन सेशन में हम उसको ऑनलाइन कहते थे, लेकिन एक्चुअल दैट वाज नॉट ऑनलाइन, दैट वाज ऑफलाइन बट थ्रू ई सिस्टम. okay. So we will see asynchronous, synchronous mode. Basically, आप asynchronous mode की बात कर रहे हैं. See, distance learning. We all know about distance learning. It is one of the oldest, you know, terminologies that we have in terms of technology. अच्छा, whatever we are doing right now, इसमें सिर्फ एक addition है, वो किस चीज़ का, वो online. Distance learning is a very old thing. You know, if you see Harold Wilson, British PFS, he actually came up with this idea, and his statement was that educational opportunities to those who missed education due to early employment and wish to upgrade their knowledge and skills in spare times in the evenings at home. Look, जाहिर बात है, they start working earlier. You know, we're talking about 60s. This is important. Okay. So this guy, this gentleman, this prime minister came up with this idea that those who are working, who never finished their education, should be given an opportunity to, you know, continue their education. Great. So first Open University was established in 1969. ठीक है? It knows when was the second university. But if I can ask a question. Sure. Sir, just like it's the first open and 11 bar open. Sir, why we call them open university? Okay. But what is the purpose? Amen. So पहली ओपन यूनिवर्सिटी आपको मिलती है 69 में, दुनिया में जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है? दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी in the world was Allama Iqbal Open University in 1974. Just imagine. इतने फास्ट है. इतने fast है. So in 74 we were better. क्या होता है? We were better than today. Imagine England starts an initiative for their people, you know, who did not complete their education. We picked up on the idea and we started Allama Iqbal Open University. I came to know when I was in a training program abroad, you know, and it was a matter of pride when they said among the top 3-4 earlier universities, Allama Iqbal Open University with hundreds and thousands of students there, you know.
डिस्टेंस लर्निंग आपने कहा ओपन यूनिवर्सिटी, इसका नाम ओपन बेसिकली रखा इसलिए गया कि it is going to be open not for regular students like this. It is going to be open for people who cannot come and sit together in a particular place. It is going to be for people who want to learn at their own pace. So it's an open university. It is a, matlab, if you are not registered in sciences, cannot come and study, right? But open university, just, you know, register yourself and you want to study at night or day or weekend or whatever, you know. So the concept was open for working people. ठीक है? Basic idea जो है वो working people का रहा है. अलामा इकबाल भी आई और बहुत successful रही है. अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो है, मतलब बहुत आप देखें कि just up to online चीजें हो गई. But at that time, in 70s, 80s, I remember 90s में people they would send through post, you know, books and all material, and you will do all these things at home, and then you will submit them back to your instructors and all that. ठीक है? तो concept हमारे पास वही है. अब हमने उसको ऑनलाइन कर दिया. Sorry. So online learning is just another type of distance learning. But the difference is the teaching takes place on the internet using modern ICTs, ठीक है? Information communication technologies. It enables dialogue among students, teachers, independent of where they are located. Yes. No physical presence required, but often perceived less threatening by shy or introverted students. Is it true? Yes. Do you believe that? Have you experienced that? That some people are comfortable behind the screen rather than in this kind of environment. So it's a positive thing, basically. It's a positive aspect of online teaching that those who are introvert, again, you're all teachers. You've got 40, 50 students. Not everybody's participant. Sometimes you have to drag some people out, you know. But this model will give that kind of shy person, you know, that space that he or she can be active in that rather than being in this environment. So this is a positive. No commuting required. पैसा भी खर्च नहीं होता. घर बैठे रहे, ठीक है. आने जाने पे भी बच गए. कपड़े शपड़े बदलने की कोई अच्छी जरूरत नहीं है. You can just do. हाँ? Time बच जाता है. Time and money. Transportation. बहुत से फायदे हैं. Right? Learning materials are so easily accessible. In class, you know, I have a book. I can, I don't know, give you handouts. I have to print them, you know. I have to get it printed or whatever. And then I have to distribute. Now I can put everything on a portal and you can access. I can put more material than you need. You can choose, which one to go for. Yeah, this is important, that one is important. And again, it doesn't cost anything. I think this is one of the aspects of this training is to impart some new technical skills, you know. And why are they important? Well, direct communication with professors, like recall your time when you were students in universities, interacting with your teachers was different. Today it's much easier, you know. You've got WhatsApp, you've got all these other tools, you know. And it's much easier to talk and to share. Digital pedagogy. Now, we all know about pedagogy, right? Teaching. Digital pedagogy, teaching using technology. Back in 2001, this is Prince Lee's educator, American head. He has his own website now. Or trainings करता है पूरी दुनिया में. 2008 में, this is what he writes. He wrote a paper, and this is the statement. Digital natives, इसने दो terminologies उस वक्त बनाई थी. एक को कहता है digital natives और दूसरे को कहता है digital immigrants. दो terminologies इस पेपर में. Again, keep in mind 2001, ठीक है? Natives are used to receiving information really fast. They like to parallel process and multitask. Prefer the graphics before the text rather than the opposite. They prefer random access. Hypertext, this link yes. They function best when network. They thrive on instant gratification and people rewards. They prefer games to serious. Sounds familiar? All of this? We are studying in 2022, right? This is all happening. This is common. Yeah.
multitasking is there. It's so easy with the phone, with the computer, you know, we can do that. We can reach so many people. But back in 2001, there were no smartphones, there was no Facebook, there was internet, but not like today, you know. So this was amazing, you know, when he came up with this idea that there are two kinds of people, natives and immigrants. So natives तो मैं समझ जाते हैं कौन है क्योंकि younger generation है. Do you think our younger generation can we consider them as digital natives, like they're very comfortable with the technology, they have no problem? Huh? Young children, right? They're going to have one thing that you would realize if you look at your parents and then children, the fear of technology. Parents have that fear, the children have no fear. They are more, you know, open to experiment something. But if you look at the older generation, they're always kind of reluctant, you know, to go for kharab nahi ho jaye, koi cheez wo na ho jaye, you know, if I do something. So they are real natives. So दूसरी terminology आती है immigrants. So who are these immigrants then? In fact, if we see, we are all immigrants. At least I am, because I'm from the older generation, you know. I remember when there was no internet, when there were computers, no laptops. So we saw the transition. Today, it's impossible to think living without a phone or internet or a computer. When you're in your offices and just the internet is gone, just for 20 minutes, you guys you can't do anything. Imagine when there was no internet, you were still working. There were no phones, we were still running around. So, transition from traditional teaching modes to digital pedagogy के perspective से बात करें. One of the hardest transitions for teachers is the move from being the expert in the class to being the co-collaborator. Again, recall when we said, when I talked about experiential learning, that we are now this traditional model is not working anymore. When the teacher comes, everybody stands up, he or she has to say things for a certain amount of time. You have to take notes and then go home and try to remember that. Now we are collaborators, want to learn. And this has been possible because of technology. Technology is something which has made it possible. For example, if a philosopher, big philosopher, मैं अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसफर समझता हूँ, और मैं आपको फलसफा पढ़ाता हूँ, बहुत कम होगा that you question me or you know suggest me कि नहीं जी इस तरह नहीं, क्योंकि एक बंदे का command, एक subject पे ठीक है ना, teacher है वो traditional है. On the other hand, and this happened with me, for example. So when I'm telling or teaching about writing, I'm always telling them that, you know, use technology. Our grammar is we're not natives. We don't know the real grammar, we have vocabulary issues, so use what you have. So MS Office है, MS Word है, वो आपको suggest करता है, spelling भी suggest करता है, grammar भी suggest करता है, use करें, ठीक है? Google Docs है, वो भी suggest करता है, Turnitin भी suggest करता है, so use it. When it gives you suggestion of changing or rephrasing something, do that. So what? Grammarly एक app है. Yes, I was just coming to that. That one of the students, just like she said, in the class told me this, why not Grammarly? I had heard about it, I never used it. So I started discussing what is it, and amazing. So I would suggest definitely use it. Free है, personal use के लिए, और वो MS Office से ज़्यादा बेहतर options आपको देता है. Beautiful. Your English, your document will be amazing. ठीक है ना? So the thing is, जितने हम ट्रेडिशनल होंगे उतना चेंज हमारे लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन जितना आप टेक्नोलॉजी सेवी हो जाते हैं ना, तो उसके साथ फिर आपके अंदर ये चीज आती है that you are open to accept some. So I'm not going to you don't know, only I know, because in technology young generation is much, हमने भी बात की, they're natives. So an immigrant cannot drive the native. बात समझ रहे हैं ना? We are immigrants, we've learned, we have adopted it, you know. But still, there is a generation जो पैदा इसके साथ हुई है, जो comfortable है इसके साथ, ठीक है? So they have more options. So we need to be open in that respect. अभी हमने बात की, हमारे पास asynchronous है, हमारे पास synchronous है. जो हम कर रहे हैं online वो synchronous mode है, ठीक है ना?
आपने जो बात की थी that you record lectures. In fact, डिस्टेंस लर्निंग जितनी भी है वो सारी एसिंक्रोनस मोड में होती है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन टीचिंग है ये सिर्फ आई है कोविड की वजह से पूरी दुनिया में, जब वो और कहीं भी नहीं होता और ना हो सकता है, बिकॉज द आइडिया बिहाइंड डिस्टेंस लर्निंग इज टू रीच अ वास्ट audience. We can fit maybe 100 people maximum here, maybe 80 people, but we cannot fit 800 people. We can access to now teaching 800. If imagine I have 800 people sitting or even listening to me, how can you handle them in 1 hour? So there we have the most popular, most common mode जो हमारे पास asynchronous है, दूसरा synchronous है और तीसरा hybrid जो है कुछ सेशंस आप ले लेते हैं ऑनलाइन बाकी एग्जैक्टली तो ये इस तरीके से modes are there. There is a difference in between the compulsory online learning and non-compulsory. Like in the situation of a COVID-19, it was compulsory that everyone have to switch towards the online teaching. So obviously the dynamics of that thing will going to change. Yeah. And you pre-COVID-19, that was an optional that either you wants to go for an online and you go for the conventional. We will come back. जब आखिर में challenges है ना, ये point हम touch करेंगे, ठीक है? ये definitely होगा. इसीलिए मैंने भी बता दिया कि online teaching जो है वो special situations में, जैसे हमने देखा, ना उससे पहले थी ना उसके बाद उस तरह चल रही है, ठीक है? But why does it become compulsory and the problems जो कि West ने face किया, हमारे तो बड़े अलग मसाइल हैं, infrastructure के हैं. West में तो infrastructure की मसाइल नहीं. They have the same level of internet and technology and everything, but the same problems that they faced, that we faced, they have also faced. So that will be a key. Acha. LMS, heard about it? कौन सा LMS आपके पास? Sorry? LMS कौन सा यूनिवर्सिटी में? In City University, at that time, they have developed their own LMS, so software engineer that. अच्छा, nice. Of that university. We use that LMS. अच्छा. And at that time, I was a student, and she was a student, and she was a teacher, and I was a student. And it was a very good system. Yes, Sure. our evaluation was attached to it. Our MIS was attached to it, and it was very good. Sir, our results, our needs. So our customized everything. system था, ठीक है? Anybody else has a system? We have a most class also his own ACMS, Arts Management. तो आपने खुद बनाया हुआ है? It's a university government. सर हमारा Moodle आपका Moodle पे है? सारी जो HEC ने ठीक है, Moodle पे है. यानी कोई कैनवस पे है, ब्लैकबोर्ड पे है? कहाँ पे? कौन सी यूनिवर्सिटी? एक प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में हमारे पास. अच्छा. इंग्लिश एक्सेस मैं उसी पे यूज किया था. नाइस. अच्छा, यूज किया था, इम्प्लीमेंटेड नहीं आपके पास? यूनिवर्सिटी में नहीं implement हुआ, कुछ प्रोग्राम में Okay. टीचर करते हैं. Okay. What about the software that we are using right now? Microsoft Teams, Yes. Somewhat. Google Doc, Google Team. So, for example, what is LMS? It's a software application for the administration, documentation, tracking, reporting, delivery of education courses, training programs, learning development. और almost एक चीज मैं इसमें निकालूंगा, सबसे पहले administration. That is the missing link. उसके बाद whatever is mentioned, you can access through your Microsoft Teams or Google Suite. Create deliver content, monitor student participation, assess the student performance. For example, आप कैसे create करते हैं? आपको Word चाहिए, आपको OneNote चाहिए, आपको PowerPoint चाहिए, ठीक है? वो available है, Office 365 का पूरा package आपको available है, ठीक है? By the way, आप लोग यूनिवर्सिटी में भी public sector में तो सबके पास है, ठीक है ना? Office 365 का access. It's a beautiful program, you know, collaborative उसमें. Facilitate students with the ability to use interactive features, live chat, video conferencing, customizable learning environments. This is the other part जो कि unfortunately हमारे पास इस LMS में जो है नहीं है. इसीलिए मैंने कहा कि somewhat assessment, engagement, and reporting tools. Now, but we have to see the difference. You know, for example, some of the most popular companies out there, you know,
some of the most popular companies. Moodle hai, OpenEdX hai, Blackboard hai, Canvas hai, Sakai hai. I've changed the color because this color is representing the blue colored ones are those which are open source software. Open source software. What is an open source software? हमने भी Open University की बात की, ठीक है? They can access by Or you can assess the source and you can modify and modify your own. Yes. By the registered students. Customize. It gets customized according to the need of the. That can, any other software can be done. Subscription based versus open source. चलिए अब मैं आपको बताता हूँ. एक है subscription based, For which you have open source. For which you have subscription or for what you have free. for subscription दो बातें होंगी. एक तो पे, definitely पे करना है. और दूसरी बात क्या है? You cannot make any changes. Can you change Word, MS Office में? Can you change PowerPoint? You cannot do anything. ठीक है? Open source जो है ना, जैसे Moodle है या Sakai है, they are free. Theoretically speaking, okay? हाँ, अब free का क्या मतलब है? मैं एक मिसाल देता हूँ. For example, there is a furniture maker. Okay, the furniture maker has a model. You know, he makes the furniture, table, chairs, beds. You know, then he sells for a certain price. What if he comes up with an idea that okay, I'll make the sheets, I'll make the raw material. You know, unassembled form. I'll give it to you for free. You just assemble it. Oh, you say, well, I can't do it. It's very difficult. Well, then I can help you, but I'll charge for assembling that. But does it make any sense? If I am the manufacturer, मेरे पास 20 customers, and I give you the material for free, can I do that? Why? Impossible. Impossible. Yeah. Because there is cost behind the physical stuff. वो जो material है उस पर पैसे तो लगते हैं. That model fits here because software एक दफा बन गया, उसके बाद उस पर पैसे नहीं लगते. Replication उसका free है. So Moodle क्या करता है? Moodle आपको कहता है, you want to use it, take it for free. बनाओ देखो तो उसमें जो भी करना है. IIM Sciences किस तरह चलता है? हजारे यूनिवर्सिटी का क्या स्ट्रक्चर है? फलां यूनिवर्सिटी का आप खुद करें. नहीं कर सकते? We will help you. We will charge you for that help. So that's another model of charges. ठीक है? Subscription based आपने ब्लैकबोर्ड ले लिया, बहुत आसान है. आप उनको पहले से बता देते हैं, this is our structure, this is our requirements, ये material वो आपको सब बना के दे देंगे. You just have to use it. ठीक है? The charges are very high. Canvas जो है for ये ब्लैकबोर्ड जो है almost हमारे इंस्टीट्यूट जो 3000 स्टूडेंट्स का हमने लिया तो 1.5 करोड़ रुपए, ये डॉलर से पुरानी है, 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी तो डॉलर और ऊपर चला गया. 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर चार्ज करना. ठीक है? It's a very expensive service subscription. So लेकिन ये कैनवस हो गया, ज़ेनाई हो गया, ये बड़े पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं. आप ले लें, आपके पास अपनी आईटी टीम है, वो खुद डेवलप कर सकते हैं. सर मैं आईटी से नहीं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर आप. सर ये जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो डिफरेंट वो होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस, वो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो मस्ट इनके ऊपर ही. नहीं, ये तो प्लेटफॉर्म्स है. देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है उसके लिए तो फ्रॉम स्क्रैच है. इट्स जस्ट लाइक कि आपको बिल्कुल आप दरख्त आपको लाके दे दिया जाए और आपने उसको काटना भी है और उससे आपने टेबल बनानी है. डेवलपर एक्चुअली वो फ्रॉम स्क्रैच करता है. ये बने बनाए प्लेटफॉर्म्स. इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड डिग्री नहीं चाहिए. यू जस्ट नीड सर्टेन स्किल्स. यू नो, आपको पता होना चाहिए यार कि ये स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, थोड़ी बहुत चीज वेरी इजीली. यू डोंट नीड दैट बैकग्राउंड. ठीक है? तो ये जो है हमारे पास बड़े स्केल के हैं. फिर गूगल क्लासरूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है. वन ऑफ द कॉलीग्स इज गोइंग टू टॉक अबाउट गूगल सूट. उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, आपको वो बताएंगे. टीम्स के साथ देखिए मैंने लिखा फुल स्केल एलएमएस नहीं है, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी चीप. यू नो, डू यू नो हाउ मच ऑफिस 365 कॉस्ट इन पाकिस्तान सब्सक्रिप्शन? क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है. ठीक है, फ्री, ये ओपन सोर्स नहीं है. So I purchased from Australia. 12,000 रुपए, 12,000 रुपीस पर ईयर आपसे चार्ज करता है. आपको 6 लाइसेंसेस देता है. So it's 1000 रुपए महीना पड़ गया. It's very cheap. You know, वैसे तो हमारे पास है HEC का एक्सेस है, but even if you have to take it,
पूरे घर के लिए 6 लाइसेंसेस आप कर सकते हैं, 6 कंप्यूटर्स इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, टीम्स उसमें शामिल है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल जो माइक्रोसॉफ्ट लेके आया है यार, इसमें क्लब लेवल पे लिया कि लोग वो जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है उस पे ना जाएं, ठीक है ना। तो for small scale institutions, organizations, एक चीज ध्यान में रखें, LMSs are not only for education institutions, they're used by companies also, ठीक है। बड़ी large companies जो हैं, they're also using them to train their people, to keep, you know, all the material online available to them, right? अच्छा, heard about MOOCs? Yes. अब इसमें देखो, ऑनलाइन का वर्ड निकाल थोड़ा तो वो फिर वाला मैं बात करूंगा, ठीक है जो 74 में आई थी। There is one thing massive जी, जैसे डिजिटल स्किल्स, डिजी स्किल्स पाकिस्तान ने शुरू कर रहा है। कर रहा है, लेकिन अभी ऑलरेडी कर लो। Sir, another platform launched by NUM students, Nearpeer. They're offering these services of new skills, CA, HCA, CSS courses, other than visiting any. Affordable, flexible way to learn new skills, advance your career, deliver quality education. All right. Two चीजें important हैं। एक है free, और एक है web based। ठीक है, ये दो चीजें। अगर ये कंडीशन पूरी फिर आप आते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम आगे देखते हैं यार उसमें और क्या इशू है। You may have to pay certain people getting grades, feedbacks on assignments and post completion certificates. That is a separate issue. If you don't need a certificate, if you don't need assignments to be graded, you just want to learn from one of the top people in the world, it is for free. Yes, exactly. Even some universities are offering online degrees, you know. Yes. University of Urbana-Champaign, master's degree program, one of their most favorite program in data science, Exactly, IBM. was offering, normally they would offer 35 students, $45,000, you know, the normal course fee. You have to do GRE and all that. Online, $18,000. Same company, the same university, the same thing. Now here, the thing is, as I said before, if you have to teach 800 people or more people, you cannot act as a teacher. So that's why we say, you know, we use the word master trainers. They are best in the world on particular subjects. Unstructured courses. What is unstructured courses? I want to learn something about photography, which has nothing to do with my curriculum, which has nothing to do with the degree that I'm pursuing, you know. So I can take it. All these courses which are available on these MOOCs platforms, they are not conforming to the course structure that we have. 48 credit hours होने चाहिए नहीं, इतने घंटे का practical होना चाहिए, कोई ऐसा चीज नहीं। कोई कोर्स कहते हैं 3 घंटे का कोर्स है, कोई कहते हैं 3 हफ्ते का कोर्स है। So it depends, you know. So they're unstructured and they're not credit courses. Modern lectures, community meetings, online quizzes, interactive discussion forums, you know. Flipped or inverted classroom model use करता है। पढ़ा हुआ आपने interactive sessions में flipped classroom? Flipped classroom model क्या है? जब हम असाइनमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को, वो स्टडी करते हैं, बाद में उनसे फिर क्वेश्चन करते हैं। Exactly. So normally what happens, you have a lecture, you come prepared, you put your slides, you start reading your slides, they are listening, then maybe next day or later on they ask questions. So flip, the inverted is, you give the material flip beforehand. So tomorrow is the class, I'll give you my, say, whatever slides I've made, plus reading material. Okay? And then the next day, when I come in the class, I assume, that is the big assumption, I assume that you've all read that, you've seen my slides, you've read all the material. Come on, let's discuss, ask questions. Now, when we experimented it, big failure in the class. It didn't work, honestly. और भी देखते हैं कि वो क्या लाइट चली गई थी रात को, बिजली नहीं ट्रांसफार्मर किया था। वो तो हाँ, वो तो सारा लेकिन ये मॉडल तो जितनी भी थ्योरीज लिखी हुई है ना, वो क्या जी ये नहीं चला, ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ
ऑनलाइन टीचिंग में। ये जो मूक्स है ना, इस प्लेटफॉर्म पे पहले से आपने एक कोर्स ज्वाइन किया, जैसे फोटोग्राफी की बात की, वहां पे वीक 1 ये लेक्चर पड़ा हुआ है 10 मिनट का, ये मटेरियल है पढ़ लो वगैरह वगैरह कर लो, ठीक है। सो दिस इज दैट इन्वर्टेड क्लासरूम मॉडल। और फिर जब कर दिया तो आखिर में आप फोरम्स पे जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं, यार ये समझ नहीं है, इसको करना है, कैसे करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। I think sir, there is a difference क्योंकि MOOCs प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वो लोग जाते हैं who has the craze of learning something और नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स पे हम उनको इम्पोज कर रहे होते हैं you have to कंपल्सरी टीचिंग की बात करें, बिल्कुल। ये सब ऑफ द पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, Coursera, edX है, मेरे ख्याल है anybody ever took a course yes sir Coursera? Coursera edX both Okay, nice. Yes. sir even I'm taking a course from Google as well Google offered a new course on this data analytics and cybersecurity Google is going to be, you know, I mean, wait a second. बात में तो करेंगे किसी टाइम। Khan Academy, अच्छा, Khan Academy is not for you, like for adults or for university teachers, but those who have kids, it's an amazing thing. I personally learned a lot. If you have children, till 12th grade, बहुत जबरदस्त mathematics और science का बड़ा जबरदस्त material है, freely available, ठीक है ना? सर अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अच्छा है क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारा लेवल कहाँ, उनका जो 12वीं का लेवल है वो हमारा यूनिवर्सिटी तक जाता है, तो उनके लिए भी बिल्कुल ठीक होगा। बट जनरली सर बिजनेस फाइनेंस का इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जी सर हमारा मैथमेटिक्स और उसका ज्यादा वो है, बट वेरी गुड मटेरियल, यू नो। Just, you know, this data is changing on a very regular basis, okay? So just to give you an overview. 2012 में Coursera आता है, इसके बाद mid 2012 में जो edX बनता है, Fusion Learn आ रहा है, ठीक है? आप देखिए कितनी जबरदस्त फिगर्स हैं। कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी क्लेम नहीं कर सकती कि यार मेरे पास इतने लोग हैं, ठीक है? 45 मिलियन, और ये अभी डबल हो चुकी होगी, ठीक है ना? कितनी पार्टनर यूनिवर्सिटीज, सी कंसोर्शियम, फिजिकली एक दो यूनिवर्सिटी में मिलकर चीजें करती हैं। यहाँ पे एक कोर्स आप एक जगह से उठा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, बेस्ट people in the world, amazing people, you know, who are really known in their fields. You can learn from them directly. चलो, उससे पहले के चले जैसे आपने बात की मैसिव ओपन है। अब मैसिव से क्या मुराद है? 100, 1000, 10,000, million, 10 million, I mean, how do you define? और उससे पहले स्किल्स के आपने कम्युनिटी एंड कनेक्शंस। सो मूव्स किसी एक कम्युनिटी के लिए काम करता है। आपने देखा हो, मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया because it doesn't fit. It's not an open university, it's a virtual university. It is for those who get admission and get a degree program. It's not like you can just go and start learning from the no. ये टीवी देख लगा लो अगर उसका प्रोग्राम आ रहा है, but it's not like that. Massive community based है या scalability, anybody can come in, ठीक है? So ये questions हैं. How do you define that? Open content है, free of charge है, you know, जैसे मैंने कहा, कुछ को अब Udacity है, उसके courses पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? Coursera के mostly courses हुए, फिर बात लोग करते हैं यार कि you need to get the certification because it helps. I have learned from Mr. X, जो कि नामी गनामी आदमी है, और मैंने इतने अच्छे असाइनमेंट्स कर लिए, नाउ आई नीड दैट रिकग्निशन, ठीक है? $50, $100, $200, डिपेंड अपॉन व्हाटएवर कोर्सेज है। रियल टाइम इंटरेक्शन हो सकती है, कोर्सेज में होती है। स्मॉल ग्रुप्स बना देते हैं जिसमें जो मास्टर ट्रेनर है, डिस्कशन फोरम्स है, उसमें जो टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, वो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो अपने फ्रेंड्स में जैसे कहा, ठीक है, कॉलेज ट्रेनर्स, जैसे हमारे का डिग्री प्रोग्राम्स है, उस तरह का कोई प्रोग्राम ले लो, जरा एक्सपेंसिव होता है लेकिन वो क्रेडिट्स आपको दे सकता है, ठीक है ना? ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी और इस्लामिक वैल्यूएशन यूनिवर्सिटी में मतलब क्या डिफरेंस है? आपने वर्ड का डिफरेंस है, ये वर्ड आपने खुद बोल दिया, वर्चुअल। देखिए, रियलिटी हमने पहले भी बात की थी, व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी इज पर्सपेक्टिव, यू नो, I am real, you are real. So virtual university क्या है? You don't have to go to a campus to take a class, but it is still a university. आपको BBA करना है तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं,
ठीक है, आपको रोजाना यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, उसके लेक्चर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या आई डोंट नो ट्यूशन में भी कुछ चल जाता है, टेलीविजन पे भी होता है। हाँ, फिर वो आपको एग्जाम के लिए बुला लेते हैं, एक सेंटर बना देते हैं जी, एग्जाम आपने इधर देना है। So it's still virtual, it's still a normal degree, but classroom नहीं है, virtual है। Open university घर बैठे रहो, ठीक है, एग्जाम जरूरी नहीं है कि आपने उसी टाइम पे एग्जाम देना है, ठीक है ना, आप अपना स्केड्यूल एडजस्ट कर सकते हैं उसके साथ। You got my point? ठीक है। Virtuality की definition भी अब change हो रही है, like initially we were seeing that fully virtual or you can say that Virtual भी तो open it is like we can say that now we are seeing that most of the organizations after COVID-19 they are switching towards the virtual organizations, means like the same the program we are sitting here. Yeah. So it is also at some extent it is virtual and at some extent it is physical. So प्रॉब्लम ये है ना कि ऑगमेंटेड वर्चुअल, ऑगमेंटेड रियलिटी भी एक तीसरी चीज होती है, ठीक है ना। सम पार्टिसिपेंट्स आर नॉट प्रेजेंट टुडे, आई थिंक चंद पार्टिसिपेंट्स नहीं, वो कहते हैं हम ऑनलाइन आ जाएंगे, अब वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर, यू नो। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या कहती है कि यस वी आर ऑल गोइंग वर्चुअल। प्रॉब्लम ये है, आज जो मेरा डिस्कशन है वो ये, इज इट वर्किंग और नॉट, बिकॉज दिस इज द की। यू हैव द टेक्नोलॉजी, हमने कहा सस्ता भी है, टाइम सेविंग भी है, सब कुछ है, सो व्हाई आर वी नॉट डूइंग इट? व्हाई डिड वी अगेन कम बैक टू दीस कैंपसेस? व्हाई आर वी वेस्टिंग सो मच energy and everything? That's the point. You have virtual, you have now these Oculus devices, amazing devices, ठीक है? We are not doing that. That is the problem, you know. और वो मैं चाह रहा हूँ कि हम उसको निकालें कि हमारे साथ मसला क्या है, और ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, ऑफिसेस में भी हो रहा है, ऑफिसेस में भी हो रहा है। You can say the shocking conversion of like Bangalore University have converted their examination procedure, I think. Change हो। पहले वो assignments वगैरह लेते थे, अब वो physical exams ले रहे हैं। अभी हम आते हैं इसके ऊपर कि ये चेंजेस देखे 74 में वो आई थी। टारगेट सिर्फ एजुकेट करना था, एग्जामिनेशन वाज नॉट इम्पोर्टेंट। क्यों? उसकी बड़ी वजह है। आई एम अ वर्किंग पर्सन, यू आर अ यंग स्टूडेंट, यू नो, यू डू योर ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग दैट ग्रेजुएशन एट 55। कैन वी compete with each other? No, I'm not going to compete on a position where you would be applying. So my position is totally different. I'm looking at a very different scale, you know. So concept ये नहीं था कि वो अलामा इकबाल या ओपन यूनिवर्सिटी का जो कैंडिडेट है वो आम कैंडिडेट के साथ मुकाबला करेगा। बट उस डेफिनेशन में आपको पता है विल्सन ने ही कहा था कि जो वर्किंग क्लास है, जो चले जा चुके हैं, ठीक है, वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, ठीक है। बट यस नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, they cannot sit like that, you know. तो अब ज़ाहिर बात है यंग लोग भी जा रहे हैं, तो और वो एग्जामिनेशन सिस्टम को तो नजर आ गया कि यार पहले एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। 40 million people did so in 2021 and इतनी हुआ है, ठीक है। मसला क्या है? एक बड़ा अजीब किस्म का मसला है। हमने देख रहे हैं कि यार millions of people are registering on Coursera, millions of people। Coursera अपना डाटा नहीं बताता। I got it। You know how much is the success rate of Coursera? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, 3%। 3% अगर 1 million हो तो उसका 3% निकालो, जो कि कोर्स कंप्लीशन उनमें भी शामिल हूँ 3%। उनमें भी शामिल हो, उनमें जिसने Coursera या whatever वो लिया उसमें वो सारे शामिल है। क्यों? कि आपने 10 मुफ्त है ना, मुफ्त की चीज तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। 10 कोर्स उठा लिए, हाँ ये एग्जैक्टली आपने उठा लिया, 2 दिन बाद नहीं आता सर, ठीक है, बोर हो गए। तो जब आप बोर हो सकते हैं तो स्टूडेंट भी बोर हो सकते हैं, हम पढ़ाते हैं, हाँ हाँ डंडा भी होता है, ये सबसे बड़ा मसला। urge नहीं है सर, और population जो है वो differences होते हैं। Like we are nowadays, जिस तरह आपने for example मेरे इशू है, पेरेंट्स यूटिलिटी बिल्स पे ऑफ कर रहे थे, तो मैंने कहा मुझे दे दे, मैं ऑनलाइन पे ऑफ कर दूं, इशू ये आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। कहते नहीं मुझे दे, मैं खुद जाऊंगा वहां पे, वो मैं कैश दूंगा, वो मुझे फिजिकली वो हाँ मैंने दिए, तो वो they are not accepting this thing that it happens. They are resisting the technology, they are resisting the change, you know. They are not even digital immigrants. They don't want to become those immigrants, you know, digital immigrants. We have become, we've admitted it. We are sorry.
It's so easy, you know, because their trust is still on the old system. Our trust is now built on this system, ठीक है? सर इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये नेशनल बैंक है। अभी परसों तक वो लोग वही सिक्के देते थे लाइन में खड़े होने के लिए, मतलब वो रसीद का सिस्टम और वो चीज डाउन का कोई एटीएम था ना कुछ ऑनलाइन सिस्टम था। अब उनको मजबूरन कन्वर्ट होना पड़ा, अब वो हो गए क्योंकि उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ गया, डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि वो पुराना वाला ही सिस्टम था, एक कैशियर बैठा होता था, वो अलग से देता था, वो सारा कुछ देखिए, मतलब पूरा मैनुअल। देखिए मैंने जैसे कहा, मसला ये है कि कितना टाइम हमने लगाया है। If I am 60 years old and I see computers and all these things coming, you know, I am already done with my life, you know, in Pakistani perspective, and now you're telling me. So एक तो perspective है, because देखिए जो सबसे बड़ा problem आया, अभी हम मुझे कितना टाइम है? जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि वर्चुअल ने या वर्चुअल वर्ल्ड ने जो सोशल सेटअप है, इंटीग्रेशन है, वो भी वर्चुअल ज्यादा बना दी। What you were saying, this is something that people have grown up because they want to meet somebody in real who is good. मुझे पता है, he is the banker, he is the guy who does the thing. I trust him. I trust a person. Now I don't know who is behind the machine. So वो trust जो है वो develop करना एक older generation में बहुत मुश्किल है rather than younger generation. आप और हम जो हैं, आप लोगों ने नोट किया कि नहीं? हमने नोट किया, चले मेरा तो फील्ड है computer science, but बहुत से colleagues were not comfortable going online in 2020. It took us a few months to first convince them, honestly, you know. This is the shower. Yeah, I mean, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, ठीक ठाक पढ़े लिखे, but I was surprised, मैं already ये तो कितनी बड़ी बात थी, but नहीं, it was a problem. So it took us some time to convince some people that this is, and then accepting that and then going there, you know. दासिंगा की जी वो आ जाते हैं, कर रहा है कैसे सर, ये भूल हमने खोल लिया, मैं करूँ क्या इसके साथ? So वो resistance जो है ना, वो भी है, unfortunately. बिटकॉइंस को यूज करते हैं। Okay. So I guess अच्छी बात है बहुत, ठीक है, अभी हमने जैसे देखा बहुत सी बेनिफिट्स हैं, लेकिन मसला ये है कोर्सेरा 3% दे रहा है, एडएक्स पता नहीं कितने परसेंट, यानी 10% तक मिला के मिलियन तो कुछ नहीं जा रहे, मुफ्त भी है। अच्छा, मुझसे अच्छे टीचर वहां बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं, इधर वाला जो है ना उसके पास आना है, घर से आउट के आना है, उधर वाले के पास जो है बस उसको पढ़ लिया, देख लिया। आई थिंक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि क्योंकि हम लोग जब फिजिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं तो एट द एंड हमको पता होता है कि हम लोगों ने उसके पीछे कुछ पेमेंट की भी है, पैसे दिए तो हम सोचते हैं कि हमने करना है। फ्री में ये होते हैं कि वी आर नॉट बाउंड, हम लोग को पता है कि ये फ्री है, एट द एंड ऑफ द कोर्स अगर मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए तो मैं पेमेंट करूंगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है या कोई भी आम बंदे होते हैं वो इसीलिए हाफ थ्रू द कोर्स जो है वो छोड़ देते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। इवन इन रेगुलर यूनिवर्सिटी अगर फी का भी इशू ना होता है तो सबसे बड़ा जो चीज होती है वो अटेंडेंस होती है। स्टूडेंट्स को पता होता है जब तक हम 80% अटेंडेंस अपनी नहीं पूरी करेंगे, हमारी फीस पूरी भी पेड होगी तो हमको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, हमारा सेमेस्टर, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। दो बातें, एक इसने कहा फ्री और दूसरी क्या बात थी, फ्री है तो हम वी डोंट केयर, और दूसरा सॉरी सर चेक एंड बैलेंस समझ लें आप। अच्छा, चेक एंड बैलेंस नहीं है, मतलब कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं है, प्रेशर प्रेशर दो तरह के सर इन अ सेंस कि सर आप बाउंड नहीं है ना, आप जब रेगुलर यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आप बाउंड होते हैं कि एटलीस्ट आपने 80% अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पूरी करनी होती है उस कोर्स के लिए। मेरे ख्याल में सर वांट्स एंड नीड्स जब हो तो ठीक है, या वांट्स नहीं है लोगों की या नीड्स नहीं है, बस ऐसे ही है, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, मैं फिर जी सर मेरे ख्याल से इसमें ये जो एक्सेसिबिलिटी है जो हमारी कहते हैं कि इन ऑनलाइन लर्निंग और एनीथिंग इन ऑनलाइन वी हैड एक्सेस टू दोस रिसोर्सेज एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, दैट फ्रीडम इज गिविंग अस टाइम एंड वी आर सो लेजी कि चलो कल कर। another good word, freedom. And when we had the time limit that आज ये लेक्चर है 9 से 10 बजे तक,
ये मुझे और कहीं से नहीं मिलेगा। अगर मैं फिजिकली नहीं गया वहां पे तो मिस कर जाऊंगा जो इरिकवरेबल है, तो मुझे फिर वो जाना पड़ता है। तो I think अवेयरनेस this is- भी नहीं है काफी सर। देखिए, let's go back to the distance learning वाला part. Motivation. What is my motivation to do that? 74 में या 69 में ओपन यूनिवर्सिटी बनती है for those people who could not complete their education. So there is something. I am motivated because I realize now I cannot study. मैं तो जॉब कर रहा हूँ पिछले 20 साल से. So they open a university where I am motivated to go there. Allama Iqbal Open University is not for 20-year-olds, 18-year-olds. So वो एक motivation is the key. Sir, I want to share a practical example regarding me. When I was a student, मैंने Coursera पे course start किया था, and still it's pending. But when I entered this professional career, I was motivated to enhance my CV. So I'm done with that course and I got the certificate. So as teachers, I went for photography, you know, I went for video editing. But as teacher, when I realized that courses which can supplement my Career. teaching career, I took them seriously. सर जब गोल सेट हो ना सर, तो गोल सेट ना हो, जिस तरह मुझसे साहब ने अपने सेशन में कहा, तो अगर गोल सेट ना हो तो आप किस तरह किसी चीज के पीछे लग जाते हैं ना। तो गोल तो सेट है यार, गोल तो हम सब ने तरक्की करनी है, हमने तो गोल बनाया हुआ है, बड़ा आदमी बनना है, नॉलेज लेना है। सबसे बड़ा गोल क्या है? जब आप कोर्सेरा पे जाते हैं आपने अपना नॉलेज एनहांस करना है, तो गोल तो मेरे जहन में चल रहा है। टाइम बाउंड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, मेजरेबल नहीं है। फ्रीडम, देखिए, as this shows what we are basically. We cannot work in freedom. That's why they have invented these classrooms, these places, these buildings where people are brought together to sit and work. सर जस्ट लाइक हम वो एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जिम में हम करते हैं, घर में हम नहीं करते। Yes. जिम में हमें फ्रीडम नहीं होता, उस घंटे हमें करवा Walk करने निकले अकेले 2 दिन बाद बोर हो गए। You need some company. So ये human psychology है basically. That फिर हमने इन्होंने बात की उसकी प्रेशर की, ठीक है? 9 बजे आपने कहा 9 बजे आएगा, 10 बजे तक होगा, टाइम का पता है भाई, आगे पीछे नहीं हो सकता, इस प्रेशर। और एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेशर है जो शायद आप लोगों ने 2020 में ऑनलाइन, वहां पर तो वो टीचर है, लेकिन वहां पे एक तीसरा प्रेशर जो मिसिंग है, जो इस वक्त मौजूद है, वो है पीयर प्रेशर। जो क्लासमेट्स है मेरे साथ, ठीक है ना, वी हैव टू यू नो वो सोशल इंटरेक्शन जो है ना, तो हमने कहा बाकी ऑनलाइन टीचिंग में कि यार उसका फायदा एक ये है कि जो शायद और इंट्रोवर्ट लोग हैं वो जरा घर बैठ के रिलैक्स हो जाते हैं, उनके लिए आसान होता है, उन पे पीयर प्रेशर नहीं होता। बट नाउ दोस पीपल आर फर्दर बीइंग पुश्ड बैक, यू नो, तो वो तो ऑलरेडी शायद थे, वो तो ऑलरेडी उस सिस्टम में कंफर्टेबल नहीं थे, और जो बाकी थे नाउ दे आर अनकंफर्टेबल बिकॉज दे आर नॉट एंजॉयिंग दैट एनवायरनमेंट। वो कंपटीशन नहीं है, शी हैज टू से समथिंग, शी हैज टू से समथिंग, वो कंपीटिंग एनवायरनमेंट नहीं है, बिकॉज़ वो सिटी समवेयर, यू नो। अरे आपने अभी जो बात की कि sometimes we want to ask question, we want to share something. Sir, I was attending different seminars and conferences in various countries, like one was from Germany and similarly in Australia. The issue that I faced, and after that I quit attending those seminars, क्योंकि 10 to 20,000 लोग होते थे online, और then we are supposed to ask question through text, through message. We are not supposed to like ask question verbally. Yes, sir. तो फिर उसके बाद क्या होता था, कभी वो सवाल कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई जवाब मिलता ही नहीं था, वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती थी, वो हम इतनी जल्दी अपने पास लिख नहीं पाते थे। So you see, I mean वो मैसिव की जो हम बात कर रहे हैं, this is impossible, you know. learning. और forum पे और forums पे जा सकते हो। So you see, there are many positives, but problem क्या है? I started when in 2020 I thought that the West is ahead. As I said, I was facing, I was asking, I was getting questions from my colleagues, you know, lots of problems online, so we were helping them. I was just thinking, यार हम बहुत पीछे हैं, हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दूर दराज के इलाकों के, उनका इंटरनेट का मसला था, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा मसला उनका ये आ गया, ठीक है जी, नहीं अटेंड कर सकते। अच्छा, लेक्चर ये लोग डाल रहे हैं गूगल ड्राइव के ऊपर, जो है क्या कहते हैं, और वो जो है वो जब डाउनलोड करते हैं तो आप इतनी हैवी फाइल बनाते हैं, इसके पास इंटरनेट, वो पैसों वाला इंटरनेट है, वो कोई पहाड़ चढ़ पे चढ़ के जो है, लिटरली वी सॉ दिस थिंग। सो आई थॉट कि यार ये मसले हैं तो प्रॉब्लम है, जब बाहर के मुल्क में ये मसले नहीं है तो इसका मतलब है दे मस्ट बी गोइंग एट अ
such a fast pace. But interestingly, from the US, from the UK, the research and the papers that were published were saying exactly the same problems. Not from terms of technology, but ये जो हमने भी बात की ना, freedom, lack of motivation, no interest. It is exactly what they were facing. और एक अमेरिका और यूके में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बड़ा फर्क है. यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज, उसमें एजुकेशन जो है वो फ्री है. यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज टोटली फ्री. ओके, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. इंग्लैंड एंड यूएस इज बड़ा एक्सपेंसिव है. ठीक है. So there this thing was that we are paying a lot of money and you are just throwing these online lectures to us. ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी हुआ कि हम तो फीस देते हैं अच्छी खासी. ठीक है, ये हमें इस तरीके से क्यों पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, हम अपना इंटरनेट ले रहे हैं और हम अपने खर्चे कर रहे हैं, क्योंकि वही देखो वो जो हमने कॉस्ट की बात की ना, कि जब कॉस्ट हमने बचानी शुरू कर दी तो अगला बंदा कहता है मैंने तो आपको फीस दी हुई है, आप कॉस्ट बचा रहे हैं तो हम मुझे वापस करें. सर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि होते हैं में जो वो आपको पढ़ाते हैं आपने वही सुनना होता है. इसमें यहाँ पे हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं, ये ज्यादा डिस्कस करते हैं. दिस इज व्हाट आई सेड, हमारे पास पॉजिटिव्स तो बहुत है. ठीक है ना, हमारे पास पॉजिटिव्स बहुत है. देखिए जैसे करते क्लास में कहते हैं हमने व्हाट इज इट दैट वी कैन फोकस ऑन. बैक ऑफ इमिग्रेशन हमने बात कर ली. टीचर्स, लेट्स बी ऑनेस्ट, many teachers are not motivated to go on. It's my job, I have to do it, Teachers was a lot. Too much screen time for kids, it was a problem, एक तरफ जो है रिसर्च बता रही है कि बच्चों को ज्यादा स्क्रीन पर बिठाओ, दूसरी तरफ आप उनको 4-4 घंटे के लिए बिठा रहे. How do you balance? ये अच्छी बात है, तो बुरी बात है, नहीं करना चाहिए. सर वही पेरेंट्स मोबाइल के खिलाफ थे, वही जाकर बाजार स्मार्टफोन ले रहे हैं और उस पर सारा दिन वो बैठ के लगे हुए हैं. तो अब क्या करें भाई, अब तो पढ़ना है. इसका मतलब है स्क्रीन पढ़ने के लिए ठीक है, गेम के लिए ठीक नहीं है. सो आई मीन कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की सिचुएशन आ गई हमारे पास. सेंस ऑफ आइसोलेशन हमने बात की, ठीक है, हम सब बोरिंग है, व्हाटएवर, देयर इज नो पीयर प्रेशर, टू मच फ्रीडम, अनसुपरवाइज्ड. डिजिटल लिटरेसी, अगेन many people don't know how to use technology. इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज की हमने बात कर दी. कोर्स स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी, क्लास का एक हमारा पुराना ट्रेडिशनल तरीका बना हुआ है डिलीवरी का. स्पेशली किनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, बिकॉज दे आर यूजिंग बोर्ड एंड मार्कर. अब टेक्नोलॉजी पे चले गए तो यार यू डोंट हैव समथिंग, so unless you put a camera and you just write on a notebook or something, there is no other way. जो टेक्नोलॉजीज है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है. जो एक्चुअली आपके पास वाइकॉम वगैरह के टैबलेट्स होते हैं वो 30,000 40,000 पे एक टैबलेट आप वो कैसे खरीद के देंगे. सो ये चैलेंजेस हमारे पास. टीचर ट्रेनिंग ऑब्वियसली इट टुक टाइम, अभी तो बेहतर हो गया रिलेटिवली. Distractions, especially in Pathan society, sir. Not it's society with distractions. टमाटर बेच रहा हूँ, पूरी बेच रहा हूँ. अच्छा Sir, बहुत तंग किया था. Sir, it was not just student problem. It was I was working on the administrative side of online courses, और उनको हर टीचर के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना पड़ा था कि कौन स्टूडेंट्स को समझाएगा. आपको एक पेरेंट को पूरा गाइड करना पड़ता था कि आपको ये सिस्टम लेना होगा, ये पैकेज लेना होगा इंटरनेट का, देन स्टूडेंट्स कैन टेक द ऑनलाइन क्लास. उसके अलावा क्योंकि सर हमारा पाकिस्तानी सिस्टम कह रहे, देसी सिस्टम कह रहे, साउथ ईस्ट एशिया का कह रहे, हमारे यहाँ वर्क फ्रॉम होम नहीं चल सकता. क्योंकि आप जब घर पे होते हैं ना, एंड यू आर सेइंग कि मेरे 9 to 5 काम है, आपने कुछ नहीं डिस्टर्ब करना, they don't count it as work. वो कहते तुम घर पे बैठे हुए, तुमने किचन भी देखते हैं, तुमने ये काम भी आप सारे काम करते हैं. आप घर पे तो आप बाहर से जाके भी स्टूडेंट लेके आएंगे, आप सारे काम करेंगे. तो वो स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहा होता था. कितनी दफा ऐसा होता था स्टूडेंट का माइक हम खोलते थे कि वो कुछ आंसर कर दे और पीछे से बैकग्राउंड में उसकी अम्मी या अब्बू कुछ जो है उसको बोल रहे होते थे. तो कस्टम को सर हमारे एक घंटे के लेक्चर्स को रिजेक्ट किया गया. क्यों?
पीछे कबाड़ वाले की आवाज आ रही होती, ठीक है, या बहुत आसान दे रहा होता इंसान, तो कमेटी सर हमारी विजिटिंग फैकल्टी ने सब्जेक्ट लेने से मना कर दिया था, वो नहीं ग्राउंड से आवाजें आ अच्छा मैं एक बात too many distractions, you're right, you know, ये reality ये हमें पहले कभी फील नहीं हुआ, कबाड़ की आवाज हमें वैसे हम कितनी दफा सुनते हैं, लेकिन वहां पे एनहांस हो जाती है टेक्नोलॉजी या रिकॉर्ड हो जाती है। बैठ की और वही सुनते थे कि पीछे से कोई आवाज तो नहीं आ रही। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या है, जो मेरा इनके साथ होता था कि यार when you are gaming all these distractions are always around but you are not distracted. When you're playing your game, when you're chatting, when you're watching something very interesting, a movie, these distractions never went away. They were there. The problem is motivation. When you're not motivated, then every other sense is working more than what is required. Because they are looking around, media आवाज भी आ रही है, फलां भी आ रही है, टीवी भी आ सर रहा है। नाश्ता कर रहे होते थे हम, क्या कर रहे हैं? नाश्ता तो कर बस वो हमारा उस तरफ से आता है, तो हमें वो distractions। ये फिल्म ये मूवी जैसे हर उसको क्यों याद आता है? क्यों याद आता है? फिल्म एग्जैक्टली फोकस एंड डिसिप्लिन अगेन वही बात है। इसीलिए अच्छा फाइनली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? व्हाट इज द टेक, यू नो, एट द एंड? शुड वी डू इट, शुड वी नॉट डू इट, इज इट हेल्पफुल, इज इट नॉट हेल्पफुल? बिकॉज़ एवरीथिंग हैज बोथ साइड्स, ठीक है? सो आई थिंक व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू understand first and foremost motivation. How are we going to make sure that one is actually motivated? Unless and until that happens, nothing is going to move forward. So that creating that motivation, you know, keep taking extra courses on Coursera, keep taking free courses and throwing them away. It doesn't matter. But try to use them. मैं जो augmented या जो hybrid model की बात करता हूँ ना, कि अभी Coursera आप ही नहीं कह सकते स्टूडेंट को यार ये जो मेरा कोर्स है ना ये Coursera पे पढ़ लो, नहीं, यूटिलाइज इट। सो ब्रिंग दोस वीडियोस एंड यूज देम इन द क्लास। उसको दे दोगे ना फ्लिप्ड वाले उसमें, तो वो कहेगा हाँ मैंने देख ली है, ठीक है, वो देखी हुई की नहीं है। क्लास में आप चलाएं 4 मिनट 6 मिनट की वीडियो चलाएं, फिर डिस्कशन करें। So this way you are going to bring that environment into the class and make sure that these people actually listen to it and you know फिर वो, और हो सकता है वहां से उनका मोटिवेशन डेवलप हो, यार there is इस टीचर के अलावा बड़े अच्छे बैठे हुए, लेट्स लुक एट दैट स्टफ, यू नो, हाँ ये अकेला नहीं है, इससे अच्छे वाले हैं। सर ये भी है, और हम लोग की टीचर्स की तरफ से भी हम लोग की भी ट्रेनिंग उस तरह नहीं थी कि हम क्लास को ऑनलाइन में किस तरह एंगेज करते हैं। जैसे कि HSC की 1 मंथ हमारी ट्रेनिंग हुई, सो दे वर पुटिंग अ क्वेश्चन जिसमें चैट में रिस्पॉन्ड करना है या गूगल पे जाके कुछ करना है, मल्टीमीटर को यूज करना है, उस किस्म की चीजें हम भी उसके साथ यूज टू नहीं थे। तो अगर स्टूडेंट को सारा एंगेज रखा जाए ऑनलाइन सेशंस में, बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ, bring, you know, you have to change the whole model, the pedagogy of teaching, you know, you have to admit that there are, first admit that there are better, you know, resources out there and we will utilize them. I will be the trainer, I will be guiding you, I will be taking you around, but there is this thing, you know. So एक augmented model को हमें चलाना है, only then, you know, जो हमने कहा peer pressure नहीं है, build करो और उसमें इस चीज को involve करो ताकि benefits डेफिनेटली होगा। देखिए कोई मॉडल अभी हाइब्रिड में आके लेकिन हम पे डिपेंड करता है। इफ यू ब्रिंग Coursera or all these resources, YouTube, you know, whatever। सर अभी मैं सर हमको और डर तवामा के नाम में मैंने लेक्चर दिए हैं, उन स्टूडेंट्स को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता था कि ये होता है क्या है, क्लासरूम क्या होता है, अकाउंट कैसे बनते हैं, टाइम टेबल नोट्स नहीं होता था, मुझे भी नहीं पता था गूगल क्लासरूम। Sir, some of the theories is saying that it was just an experiment for going online all over the world. Social experiment. So I think in future it may be like that. The people when they realize, like you are saying that we should have to motivate our students. So in future maybe they think that why we are spending so much time, why we are giving so much a huge amount of money to the universities. Why not we are going for the online courses and the online degrees? You see, so we should have to make ourselves as an institution, as a faculty member, we should make ourselves prepared for this thing that is such. Definitely. देखिए बड़ी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूँ। We have 5 minutes, right? Simple सी मिसाल आपको देता हूँ। Everybody makes CVs,
applications. I don't know if anybody hardly uses pen and paper to write a CV or a typewriter. We all are using computer. But 20 years ago, it was different. There was a transition period. So today, even if I hate a computer, if I never used it, I would never make a handmade CV and submit it somewhere. I will ask somebody to make it for me because that is the tradition. Now it's become a tradition. It's become a necessity. It's a necessity. So, ये motivation हमें stage पे आपकी वाली बात, yes, it could be a social experiment. Problem ये है, did it pass or fail? मुझे तो ऐसा लग रहा है, it failed. If it was a social experiment, let's see if people go. क्योंकि उसके बाद Google ने क्या किया, Apple ने क्या किया, आपको याद होगा, Apple ने कहा था दिसंबर 2020 में, आज के बाद से जॉब्स ऐसी हैं, घर से काम करो. सबके सब लोगों ने अपने लंदन मंडल से उठ के गाँव में चले गए, बड़े बड़े घर ले लिए कि ऑनलाइन होगा. अभी 2021 के एंड पे एप्पल ने कहा नहीं, वापस आ जाओ, कम से कम 4 दिन ऑफिस में आओगे. ठीक है, गूगल ने भी वापस बुला लिया. मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हमने एक्सपीरियंस किया. तमाम जितनी कंपनीज हैं उन्होंने कहा जी कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, 3 दिन कम से कम ऑफिस में आओगे. क्यों? बिकॉज द सोशल इंटरेक्शन इज मिसिंग. आई एम द मैनेजर, मुझे पता नहीं है कि ये मेरे जो बंदे हैं ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. ऑनलाइन नजर आते हैं, बट देर आर फ्यू पीपल हु आर ऑलवेज देयर. वहां पे ये प्रॉब्लम शुरू हो गए और इस पे वो स्टडी बाय पेपर निकालने शुरू हो गए. भाई जो बंदा दफ्तर जाता है वो बॉस के करीब है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, प्रमोशन. वो जो घर बैठा हुआ है उसका पता नहीं चल रहा है वो डिलीवरी भी डिलीवरेबल दे रहा है कि नहीं दे रहा. So there are so many issues that these large scale companies I'm talking about. I'm talking about Apple, I'm talking about Google. They took a U-turn, which we are very familiar with, U-turn on their own 1 year ago statement that we are going to work from home, हम buildings खत्म करेंगे. They couldn't do it. So we don't know, but we have to prepare for the future. मैंने भी आपको बात की virtual. But now, जिस तरह भी आपने बात की है, he is still working from home. Goes to his office for a day in a week. He is still working. देखिए, नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है ना. आपका काम जिसने, आप प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको दफ्तर की जरूरत नहीं है. यू कैन सिट एट होम, और आपने तो डेवलपमेंट बैक एंड करनी है ना. तो नेचर ऑफ जॉब, जो इस तरह की जॉब्स है, उसमें बड़ा फायदा है कि आप वहां पे काम करवाएं. मेरे पास अभी सिस्टम जो है वो कैपेबल नहीं है इस चीज को एवेल्युएट. एक्चुअली अभी आपने बताया कि सुपरवाइजर के करीब है, दूसरा नहीं है, उसको नहीं पता. बेसिकली सिस्टम इंटैक्ट नहीं है. एग्जैक्टली. सिस्टम इंटैक्ट हो जाएगा 5 साल 10 साल में, तो शायद मेरे ख्याल से फिर देखिए, टेक्नोलॉजी हमारे पास 50 साल से है. ठीक है, रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी की तरफ से तो नहीं आती ना, लोगों की तरफ से आती है. इट्स ऑलवेज द पीपल हु आर रेजिस्टिंग द टेक्नोलॉजी, हु आर अगेंस्ट द चेंज. हमारे पास तो 4G 5G अभी आ गया सर. जो दुनिया के ममालिक में यहाँ पे पहले ही आई है. हमारे पास जब 4G आया तो दुनिया के कई मुल्कों में 4G नहीं था. You discuss about virtual environment, right? So what is the difference between virtual environment and augmented virtual environment? Okay, virtual environment is purely virtual. Purely virtual is whatever you see on your screen. There is no interaction of people. Huh? No interaction, physical interaction. Zero. मैं आपको बताता हूँ. For example, ये मेरे कैमरा है. अब आप लोगों को इस कैमरे के पीछे जो कुछ भी है वो नजर आ रहा है. ठीक है, अब मैं हूं तो आपको मैं भी नजर आ रहा हूं, ऐसा ही है ना. ठीक है, दिस इज प्योरली वर्चुअल. स्क्रीन के पीछे, ठीक है, आई एम समवेयर thousands of miles away. ठीक है, ऑगमेंटेड क्या है कि व्हेन आई एम डूइंग दिस, शायद से आप मेरे साथ खड़े हुए नजर आए, तो ही इज नॉट विद मी. I have augmented him with me. I have augmented a beach behind me. I have augmented some other stuff on this side. It's a mix. हम आप लोग यहाँ पे, आप लोग सारे बैठे हैं ना, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स आज नहीं आए हुए, उनकी जो चेयर्स हैं उन पे वो आपको नजर आना शुरू हो जाए वर्चुअली. So now we have augmented. आप क्लासेस लगा लें तो आपको ऐसा लगेगा क्लास में. So आपको नजर, उनको नजर आएगा कि जैसे मैं क्लास में हूँ, बाकी मेरे साथ बैठे. So that's the augmented. Augment करना virtual. So in teaching, what is the advantage of augmented virtual teaching? Virtual teaching ये सारी हमने जो No, augmented virtual teaching. Definitely. देखिए, आपके पास, मैंने आपको बताया कि आप कोई भी चीज उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. मेरे पास, if I am showing you something, virtual जो है,
बेसिकली वर्चुअल क्या है, प्योरली वर्चुअल वही है कि जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मान लीजिए कैमरे के पीछे जो कुछ है, आप उसमें कुछ चीजें खुद से इंक्लूड कर सकते हैं। आई वांट टू शो यू एन एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया ना, यू वांट टू सी मी बट नॉट विद दिस बैकग्राउंड, आई विल पुट अ नाइस रियल लुकिंग background behind Dubai ka building as a constant. But that's what you सर इसमें एक प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं augmented live is used session to develop games and to develop new movies. आपके कैमरे के साथ आपके ऐप्स में होता है, आपके बोर्ड में एलएमएस में आपके वीडियो को ऑगमेंट है, आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर ले, आप कर सकते हैं। इनकी स्टेटमेंट में मैं ऐड करना चाहूंगी ही वाज आस्किंग कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्लासरूम टीचिंग में किस तरह बेहतर होगी। सर वो जो अभी हम प्रियर प्रेशर की बात कर रहे थे, एक वो क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, वो चीज ऑगमेंटेड रियलिटी में टीचिंग में अच्छी रहेगी क्योंकि आपके साथ स्टूडेंट वर्चुअल क्लासेस उसने पहन के आगे यही होगा कि आगे उन्हें वर्चुअल क्लासेस पहन के क्लासेस लेंगे, तो जब वर्चुअल क्लासेस पहन के क्लास ले रहा होगा तो उसके सामने भी टीचर होगा लेकिन उसकी साथ वाली सीट एम्प्टी नहीं होगी क्योंकि उसके साथ वाली में सीट पे बैठ के जो क्लास ले रहा होगा और इसमें जो सबसे बड़ा मसला है ना, एक वक्त आएगा कि आपको ये नहीं समझ आएगी कि ये रियल है ये वर्चुअल है। क्योंकि एवटार्स होते हैं वो रियलिटी बेस्ड एवटार्स बनाने शुरू हो गई है। सर एक्चुअली अभी हमें एक प्रॉब्लम होता है ना, हम जब लाइव लेक्चर ले रहे होते हैं तो कभी बैकग्राउंड हमारा अच्छा होता है, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। टीम्स में आप बिल्कुल बना सकते हैं, गूगल में बना सकते हैं, बना लें। आप अपना बैकग्राउंड आप खुद बना, हम करेंगे, वो एप्स पे जाएंगे, मैं देखूंगा एक सेशन करा इंशाल्लाह के अंदर मुलाकात होगी और हैव अ ग्रेट डे, रेस्ट ऑफ द डे। Thank you, sir. Okay, participants will have a 20-minute tea and then we're going to have the last session of the class. Okay, so just quickly with that said, and